Hello, Mataji, and watching Northeast Express on HornbillTV. Days after two women from Arunachal Pradesh and one from Manipur were hurled racial abuses and threatened by a couple in Malviya Nagar, Delhi Chief Minister Rekha Gupta condemned the incident on Wednesday and stated that Delhi belongs to everyone. Sharing a video and message on X, the CM said that in Delhi, the dignity, respect and safety of every citizen is paramount. Harassing, discriminating against or humiliating any daughter will not be tolerated at any cost, she added. The Chief Minister also met the women at her office. Meanwhile, the accused Ruby Jain and her husband Harsh Singh were earlier arrested on charges under the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act or the SC/ST Act based on the material available on record. नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत हुई तो वो भी बनाएंगे। कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। The Delhi couple who racially abused women from Arunachal Pradesh in Delhi's Malviya Nagar were arrested on Wednesday after they were booked. Delhi police issued a statement on February 25 stating during further investigation, relevant provisions of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act have been invoked based on the material available on record. The accused, namely Ruby Jain, has been arrested. Further investigation is in progress and is being closely supervised by senior officers. Earlier, one of the accused, Harsh Singh, issued a public apology saying that they were ashamed and that they never meant to target people from the Northeast. He also said that remarks were made in the heat of the moment. He also urged against what he described as media trials and claimed that his family members were facing online harassment. दिल्ली पुलिस को दे रहे हैं और हमें आंख बंद करके पूरी भरोसा है कि दिल्ली पुलिस और इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमारे साथ खड़ा है और हमें निष्पक्ष जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी निकालेगा। तो आप अपने आप को शर्मिंदा मानते हैं? बिल्कुल शर्मिंदा है सर। मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा एक इंसान ही नहीं हूं, बट ये ना हीट ऑफ द मोमेंट, अगर आप गाली देते हैं, अगर दोनों का लेवल उधर है, ठीक है, दोनों का लेवल अगर ऐसे, तो वही है कि गलती से निकल गई, गुस्से में निकल गई, बट हमारा इंटेंशन नहीं था ऐसा कि हम करें। बट फिर भी मैं शर्मिंदा हूं अपनी और अपनी वाइफ के ने जो बोला, हमने तो हमसे सुना भी नहीं जा रहा दोबारा। ये जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, हाँ, क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया वालों को एक चीज बोल रहा हूँ, यूजर्स को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनिए कि आप क्या नाम है कि आप बस एक, क्योंकि जो भी वीडियोस लगाई हैं वो हमारा रिएक्शन है, हमारा एक्शन है। हमारे सिर पे सींग नहीं लगे हैं कि हम लोगों को ऐसे, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है कि हम मारेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पे लगा, मेरे बंदे को ईंट लगते लगते बची, मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन थी, लेडीज आई, लड़ाई होगी और बढ़ गई। तो बस ये कह रहा हूं कि पूरी स्टोरी आप देखिए, आप सुनिए, और उससे पहले मीडिया ट्रायल मत कीजिए मेरे ऊपर। मीडिया ट्रायल से ऊपर है इस देश का न्यायपालिका, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मुझे न्यायपालिका पे अपना पूरा भरोसा है, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो सच को सामने लाएगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 2 महीने, 2 साल बाद, 5 साल बाद सच सामने आ जाएगा। जो हमने गलती करी है हम हंसते हुए वो एक्सेप्ट करेंगे, जो सजा हमें कोर्ट देगी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हमें ये दिल्ली के दरिंदे कपल्स मत बनाइए, क्योंकि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। मुझे 21 तारीख को 3 बजे से मेरा सारे सोशल मीडिया, मेरे फैमिली के नंबर्स, मेरे पर्सनल नंबर्स, मेरी
मम्मी की फोटो एक मतलब एक अधनंगी लड़की के ऊपर लगा के मुझे डिसअपेयरिंग मैसेजेस में आ रही है। तो गलती अगर हम दोनों ने करी है तो हमारे परिवार को नहीं लाया जाए, हमारे प्रोफेशन को नहीं लाया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं अपनी और अपनी भी, और मैं सबसे खुद पर्सनली ईमेल के जरिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न को माफी मांगता हूं। Children and grandchildren of Mizo women who marry non-Mizos would no longer be regarded as Mizos and would not be entitled to claim scheduled tribe status. This was stated by Mizoram Chief Minister Lalduhuma as the State Assembly passed the Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment Bill 2026 on Tuesday. The bill states that Mizo women who marry non-Mizos along with their children and grandchildren will no longer fall under the ambit of Mizo customary law, including its provisions relating to inheritance of property. The bill was introduced by Chief Minister Lalduhuma, who also holds the Law and Judicial Affairs portfolio. He said the changes were aimed at clarifying the scope of Act and addressing evolving social realities. The Act will only apply to marriages where both parties are Mizos or the male partner is a Mizo. Earlier, the law included women even if they married outside the community. Apart from redefining applicability, the amendment formally bans polygamy and bigamy and strengthens women's inheritance rights. Women will now be entitled to claim up to 50% of jointly acquired matrimonial property following divorce or separation after the customary sum chua. Laltuma said the amendment bill was drafted after extensive consultations and suggestions from prominent civil society organizations and statutory bodies. This included the state's apex women's body, the Mizo Chair Insue Kwan Paul MHIP, the Mizoram State Commission for Women MSCW, the Young Mizo Association YMA, the Mizoram Upa Paul MUP, and the Mizoram Law Commission. The Amendment Act will apply to all Mizo tribes and sub-tribes, excluding the 3 autonomous district councils and other tribes settled in the state that have their own distinct customary laws. The mortal remains of 56 Thanlon Assembly Constituency MLA Wongzagin Walte were brought to his residence at Torkas locality, New Lamka today, where a large number of people gathered to pay their last respects. On arrival, members of the public were requested to allow family members some private time before the body was placed for supporters, well-wishers and the general public to offer tributes. Earlier, the remains were received at Liangpui Airport and then taken towards his constituency along the Mizoram-Manipur border. At the Tuvai River Bridge, community leaders and supporters received a cortege before it proceeded along Kuwait Road. A condolence program was held at Singtol Community Hall. The procession then moved via NEC Road to Tanglong Subdivision headquarters under Tanglong Assembly Constituency. Subsequently, the remains were taken to Malnuam village, his birthplace, and later to Songtal village, where people assembled to pay homage. On the return journey towards Chudachandpur, villagers along the route gathered at various points to offer tributes. The procession halted at Swangto village and later at Singnakat subdivision headquarters, where another condolence program was observed. As the cortege passed through different parts of the town, the number of mourners increased steadily. A ceremonial gun salute was accorded at his residence as part of the final honors. Mourning continued at his residence, with people from different areas arriving throughout the day to pay their respects. The date and time at the funeral are yet to be announced, and organizers said a decision would be taken in consultation with the family. Phải tôi nói, Hùng ơi.
Governor of Manipur Ajay Kumar Bhalla and a Muslim MLA were among those who paid homage to the departed legislator. Governor of Manipur Ajay Kumar Bhalla on Tuesday visited the residence of late 56 Tanlon MLA Vunzakin Valte in Churachandpur district and paid his respects to the mortal remains. The governor laid a wreath and offered a shawl in honor of the departed legislator. He also met the bereaved family members and expressed his heartfelt condolences. Conveying his sympathies during what he described as a moment of profound grief, the governor prayed for eternal peace of the departed soul and wished strength and courage to the family to bear the irreparable loss. Secretary Advisor Kuldeep Singh also paid his respects by laying a wreath and offering a shawl as a mark of solemn tribute. The Agartala-Kolkata bus service via Dhaka resumed on Tuesday after a gap of 15 months, with a passenger bus arriving at Akaura Integrated Checkpost, officials said. Tripura Transport and Tourism Minister Sushant Chaudhary received the bus on its arrival from Kolkata. Speaking to reporters, he said the restoration of the service marked the revival of cross-border connectivity between India and Bangladesh. Chaudhary said recent diplomatic engagements between the two countries had contributed to the normalization of ties and the gradual restoration of connectivity. He expressed hope that improved transport links would strengthen trade, tourism and cultural exchanges. The minister said the suspension of movement over the past year had affected medical travel and tourism in the state. He noted that many patients from Bangladesh earlier visited Tripura for treatment and that the disruption had impacted related economic activities. According to the minister, tourism in the state was also affected due to restrictions on cross-border travel. He said the resumption of the bus service was expected to increase tourist footfall and support the local economy. Officials said the service would operate as per existing bilateral transport arrangements. Tripura Motor Party Supremo and MDC Pradiyot Kishore Debraman on Tuesday alleged that attempts were being made to take control of land under the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC in areas such as Bishramganj and Kanchanpur. He urged party supporters to remain patient and act with restraint while safeguarding the interests of the Diprasa community. The Brahman also appealed to supporters to maintain calm in the face of criticism from leaders of the other parties. He asked party workers not to obstruct political opponents and said internal divisions among Diprasa people for political reasons would weaken the community's position. Stating that his party's objective was long-term socio-economic empowerment, the Brahman said development in the TTAADC must include improved road connectivity, protection of land rights and other essential infrastructure. यहां में जो भी लीडर्स है, कुछ नहीं मिलेगा फाइट करके। फाइट मत करो, उनको आने दो, भाषण देने दो, जाने दो, क्योंकि 5 साल में एक बार आएगा। लेकिन अगर तिपरासा के संग फाइट करेगा तो बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा थानसा का मजाक उड़ाया जाए अगरतला में। आई लव माई पीपल, हम आपको प्यार करता है, इसके लिए हम आपको निवेदन करता है। बीजेपी कुछ भी गाली दे आपका बुबागरा को, सीपीएम कुछ भी बोले, कांग्रेस कुछ भी बोले, आप लोग तिपरासा के बीच में फाइट मत कीजिए प्लीज। थानसा का यही मतलब है, प्यार जीतेगा। आप लोग प्यार करता है कि नहीं? आप तो जीतेगा। प्यार नहीं हार सकता है, जो नफरत करता है वो लोग हारते हैं, हम लोग जीतेंगे। अंत में यहां में रिग्नाई का डिस्ट्रीब्यूशन है, यान का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं फिर से लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि ये रिग्नाई और यान आप लोग वीसी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, गांव-गांव में जाकर वीसी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और जो असली गरीब है, जिसको रिग्नाई हमारा यान का दरकार है, जो बुरुई जो बुमा जिसको बहुत दरकार है, उसका हाथ में जाना चाहिए, ना कि कुछ लीडर के हाथ में।
बस मेरा यही आवेदन है, क्योंकि अगर आपको असल में लोगों का डेवलपमेंट करना है तो गरीब के हाथ में जाना चाहिए, उन लीडर के पास नहीं जाना चाहिए जिसके पास पहले से सब चीज है। In a significant verdict underscoring the long arm of the law, a court in Tripura's Kowai district on Tuesday sentenced a man to life imprisonment for murder committed nearly 3 decades ago. The Additional District and Sessions Court, Kowai, convicted Ratan Debrama for the 1996 killing of Jhapi Rani Debrama, a resident of Mandvi. According to court records, the woman was attacked with an axe on September 25, 1996 and died on the spot. The case had remained pending for years as the accused was absconding for a prolonged period, leading to substantial delay in the trial. The proceedings resumed only after Ratan Debrama surrendered before the court on August 21 last year. Subsequently, the trial was expedited. During the trial, the court examined 10 witnesses and evaluated the evidence placed on record. Upon completion of arguments and scrutiny of testimonies, the court found the accused guilty of murder. On Tuesday, the court awarded him rigorous imprisonment for life. The investigation in the case was conducted by the then Sub-Inspector Pranab Das, currently posted as Deputy Superintendent of Police Traffic in Agartala. The prosecution was led by Advocate Vikas Deb on behalf of the state. The verdict brings closure to a 30-year-old case and reinforces the principle that justice, though delayed, is not denied. एडिशनल सेशन जज श्री मानवेंद्र देव वर्मा आसामी रतन देव वर्माके যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ 1996 সালে লঙ্কামুড়া মান্দাই নিবাসী শ্রীমতী ছবিরানী দেব বর্মা কুয়াইয়ের মুদি বাড়িতে তার বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসে। ওই দিন রাত্রেবেলা আসামি রতন দেব বর্মা তাকে ছবিরানী দেব বর্মাকে কোরাল দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে হত্যা করে। সেই ঘটনার দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। পরের দিন ছবিরানী দেব বর্মার বড় ভাই বিনয় দেব বর্মা আসামির নাম দাম দিয়ে কোয়াই থানাতে মামলা করে এবং মামলার তদন্ত শুরু হয়। তদন্ত শেষে 1998 সালে সেই মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়। এতদিন আসামি পলাতক ছিল। গত জুন মাসে 2025 সালের জুন মাসে আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করে। তারপর দীর্ঘদিন শুনানির পর আজ আমাদের আদালত সেই আসামির বিরুদ্ধে এই শাস্তি শুনিয়েছে। The inauguration ceremony of AUSL Olympic 2026 was held on Tuesday evening at the football ground of Assam University. Vice Chancellor Professor Rajiv Mohan Pand lightened the torch as the chief guest to officially inaugurate this annual sports festival. The program, which began at 5 p.m. in the evening, saw a large gathering of students, teachers, staff and sports enthusiasts. The interdepartmental march past, torch lighting and cultural dance and song performances reflecting the culture of Northeast India captivated everyone present. In his address, Vice Chancellor Professor Pant stated AUSL Olympic develops discipline, team spirit, unity and leadership qualities among the students. He called upon everyone to participate with enthusiasm and contribute to enhancing the glory of the university. In the coming days, exciting sports competitions will be held among various departments. The university administration has requested everyone to actively participate in the festival. 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक असम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन द्वारा आयोजित सोशल वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ और कई सारे कार्यक्रम होने हैं। आज उसका उद्घाटन है। मुझे बहुत खुशी है कि आज ये स्पोर्ट्स ग्राउंड में इसका उद्घाटन समारोह है और हमारे छात्र पूरे जोश के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। ये एक सप्ताह का जो कार्यक्रम होता है, इसको पूरे वर्ष भर सारे हमारे छात्र इंतजार करते हैं और ये समय है एक्शन का, ये समय है बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और ये जो AUSU का जो एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है, उसी का एक प्रयास है ताकि छात्र अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखा सकें।
तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं साथ ही साथ अपने असम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को और सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं जो इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं इस वीक के लिए, उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस आयोजन के सफल होने की कामना करता हूं। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.